think let me set up the laptop real quick. I think then we'll be good to go. So far from our seat, the team has been arrived. There is no the opponent's player. I don't think they're here yet. All of them. The match is supposed to start very shortly, so the timing was, I'm sure it's 8:30. Now it's 8:36, so maybe the tolerance time is already started. I think we should wait for some time, because the opponent's team that haven't arrived yet. Although the tolerance times, I think so it started, the match was at 8:30, so not quite sure about that. I should just see some of this match so I can, adjust the video quality, the audio. Okay.
I think it should be good. We've got DK in the house. He is one of the prolific players of Indian Clash Royale scene. I think we're gonna wait for some time. Oh wait, about the dual stack. I don't think they're pretty much good. I should go with my, maybe. Maybe the coach did send me something. Walaikum salam. I think we'll go for a match here. I think they deliberately gave the wrong time so the players could arrive in timely, Alright. Alright, we're seeing some bowlers engage on the both sides. I'm not gonna go for ability, I think it's just a waste. I'll wait actually to see what he have. I should go for Zappies for the King Tower activation maybe. Alright, okay, not bad I guess. It's gonna go for like bowler here. I'm sorry. Something like this. Not a great cage, but yeah, it's gonna distract the bowler. Okay. Oh wait, it just killed him. I'm gonna take this damage, it's okay. I'll not do something about it. I hardly believe that he was using E-Giant because of the
Duchess Tower, but I think so. He is using. It's gonna go for Zappies here. Should have predicted it, but I think it doesn't matter. Alright, I think I'm seeing some. Okay, or Loki thought that maybe I'm seeing some hope. Zappies is doing well. I think we shouldn't go for the tower. Let's go for a not best graveyard, but maybe you should do something. Should have predicted it, to be honest. Yeah, lightning for sure. Not great though. The problem with the streaming that you don't really hear the in-match voice. I'm playing match and I can't do anything. The streamer is not available and this guy will be playing. I think I've got a lot of time to actually make decks. Or should I go for these ones already? I like Mighty Miner more, to be honest. Let's go for Mighty Miner. Yeah, I should play something decent today, maybe. Okay, about this, I'm not sure though. What was I think it was Inferno Dragon, but I'm using it, right? Damn, I'm not using. Oh yeah, I'm using it. I forgot what's the card instead of Wizard. Oh, it's Zappies, and Zappies. Am I using it? No, I'm not. I should go for Zappies. Zappies is much more convenient than Electro Wizard. Oh wait, should I use Ronin? Yeah, I think I should. Might go for Zappies, maybe. There's Zappies. Where's Zappies? Where's Zappies? About this, I'm not sure. Should I go for RG? Should I or should I not? Should I use RG today? I think that's a pretty solid deck if I, run it good. Then it is. I should go open the fan. Couple of players. I think Mohit is their lead player and DK2. We've got Morn here too. Wait, I'll come back.
Yeah, the fan is maybe a little bit of a bother, but I can't sit in that kind of heat. It's too hot today. I think we're gonna wait for some time. The players are arriving around, so greaty maybe.
Let's see what happens about it. The match isn't even started yet. It's been 24 minutes. Okay, the game is starting in 2 minutes. Maybe I should play one match. Regardless. Against scout mode. Okay, I'm just gonna go for like zappies here. Got fireball, maybe some kind of cycle deck like Hog Rider or something like that. 2.6 maybe. It's not 2.6. Zappy is fireball and sorry, Ice Spirit, fireball and Mega Knight. I don't have a building right now in my cycle. It's gonna take time, so I should, do a little bit of convenience with my positioning. Let's go for this here. Yeah, as you can see, I don't have a if I would have had cage, maybe it would have been a little bit of easier, but I'm right now in the mid ladder. I haven't done UC yet, so I don't know, man. Let's go for a cage here. Okay, got this too. I don't have I wish I had freeze. Okay, Azan is happening, so myself shut up. Alright, first match of the day, first set. It's Farkalit versus Mohit right here, and we are seeing some hyper baits on the both side, but I think Farkalit goes his motor right here, and the spell Farkalit is using is Barbarrel and Fireball, and it's gonna be a lot of help out through the matchup. Maybe it's more of like same matchup we're seeing right here. Farkalit is using Ronin instead of Bowler, but I think it's pretty much good using Ronin because so far in the tournament we haven't seen anyone playing Ronin at all. On the left side it was a good ability, some damage too, and we're gonna be seeing some right side ability too, but Farkalit will be bar barreling this and still up a damage on the left tower.
What do you guys think about this matchup? What do you guys think? Ferkalid is so far in the damage, and we've seen like all of the cards from Ferkalid, and we're seeing some Ronins here. I pretty much of a weird choice from Ferkalid at this step. He's going like a pressured, more pressurizing type of motor deck here. Against Mohit is just going with the typical ball motor hyper bait. We're seeing some defensive motor from the both sides. I think defensive motor is kind of good in this matchup. And so far no spells from Mohit. We're seeing no spells from Mohit up till now. And Ferkalid is going to Fireball and Barbaro maybe, yeah. And still on the left side, Ferkalid is upper damage. Ferkalid is trying to defend with the Ronin right here. All of the swarms is off them, but pressurizing with the motor again, and we're seeing some good push right here from the motor, I think. But Ferkalid is pretty much low on elixir, so the Evo motor is gonna be kind of wasted right here. Great positioning of Dart Goblin on this side, and Ferkalid is doing defend the Dart Goblin too. And the Barbaro we're seeing right now, maybe right now Ferkalid is a little bit in the danger, because Evo Mortar is soon is going to connect on the tower on the right side, and is connected on the tower here. If Ferkalid goes for a Barbaro, maybe not here, he's going for Fireball on the motor, but I think will Ferkalid capitalize on this moment. A great pressure by Mohit right here, to be honest. A skeleton barrel, but it's not gonna even touch the tower because of the early rascals here. I think the only matchup is 60-40. I think Mohit have the matchup right here, but let's see what happens. We haven't seen the last spell from Mohit, which can be a game changer right here from Mohit right now, but Ferkalid is trying to, defend flawlessly with the both sides going on, but the pressure is a lot, and somehow Ferkalid is trying to still alive in this matchup. Evo Barrel is coming up right here, and Evo Barrel gonna take a damage, not on tower actually, but Ferkalid is going right in right now, defending both of the sides, and it's kind of hard. The match is in the 3x right here, guys. Let's see what happens. I don't think Ferkalid is getting much efficient damage on the tower or the left side of Mohit. I don't think so. It's gonna be happening. So it's pretty much down to the last spell of the opponent, what he's using. Great fireball for Ferkalid right here. But will he do something about his two? And the Ronin on the bridge too. It's gonna wipe out the rascal here, and we've gotta go Barbaro on the right side to defend the other tower. But right now we saw some goblin damage, but I think it's much enough. Ferkalid again going for the motor, but here Evo Barrel is coming up, and Ferkalid can't do nothing about it. Alas, we have lost the first match here of the first set. Mohit versus Ferkalid. It's Mohit. The matchup was kind of in the Mohit's favor. I think Mohit had a lot of pressurizing factors on both for the dual lane pressures and things like that. So I think Mohit had the matchup here. I guess it's 60-40 for Mohit, because Rascal gives a lot of alien motor decks and makes defensive much easier. Yeah, Mohit's decks are kind of like defensive too, but at the same time offense is much more greater for Mohit. I don't think it's much of a great MU for Ferkalid, because it's not even 60-40. In my opinion, it's 80-20 for Mohit. Yeah, with the motor decks like these, you have a lot of defense and also good offense. While on the other side, the Ferkalid was a lot of a defensive deck, but the offense he had really just Skeleton Barrel. But the Skeleton Barrel, there were a lot of options for Mohit to actually counter it.
In the 1x maybe it was Furkalit's matchup, but I don't think so. It was a great matchup for Furkalit overall. Sabar. Golden Knight!
Alright guys, it's third matchup of the day, and so far Mohit is 2-0 up right now. I think I'm pretty sure it's Lava Hound versus Drill Tech. It's kind of 50-50 matchup, right? I think so, because Mohit have a fireball, so yeah, it's the rocket is a key factor in for. I should have seen that, because I was really thinking it was poison, but I haven't seen the bomber. Yeah, I think so. It's 80-20 for Yasin, right? Yasin is going with the drill again and pressurizing on the right side a lot. Let's see if he's gonna defend it. No, he's trying to take damage in the 1x. I think it's a solid strategy against this Lava Hound. He's not making him play actually, but last card matters for the Yasin too. या फिर टेस्ला है या फिर जो है कैनन है. बट अगर कैनन हुआ तो मे बी इट्स हार्ड, बट अगर टेस्ला है तो आई डोंट थिंक, आई थिंक इट्स क्वाइट इजी विद टेस्ला. बट लेट्स सी. ओके, कैनन है. या नाउ इट्स मे बी इट्स काइंड ऑफ tough for Yasin to actually capitalize on this. All right. The right side on the board is quite साफ हो चुकी है. एक और कैनन यहाँ पर यासीन की तरफ से किया गया है. लास्ट कार्ड प्रोबेबली बलून है फ्रॉम मोहित, बट राइट नाउ वो बलून नहीं जा रहे हैं. राइट साइड से छोड़कर लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है कि पुश यहाँ पर दी जाए, बट राइट साइड पे जो है पीछे से यहाँ पर कनेक्ट हो गई है, विच इज़ काइंड ऑफ टफ फॉर नाउ जो है काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग जो है यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं. एंड यासीन यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए अगेन ऑन द राइट साइड यहाँ पर काफ़ी वनरेबल नज़र आ रहा है. बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ विनेबल मैच, बिकॉज आई सेड एज जो कि मैंने पहले कहा था, अगर ये टेस्ला होता तो शायद यासीन का मैचअप होता, बट अगर ये कैनन है तो आई थिंक इट्स हार्ड. अगेन यहाँ पर एक और पुश यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है फ्रॉम यासीन, बट सो फार डिफेंस जो है अच्छा जा रहा है. एबिलिटी की गई यहाँ पर, बट जो है यहाँ पर हमें वल्केरी डिफ्लेक्ट होने को नहीं मिली. राइट साइड पे फिर से एक पुश आने वाला है यासीन की तरफ से, एंड यहाँ पर फायरबॉल करके कैनन को भी उठा लिया गया है. बट यासीन इज़ गोइंग फॉर द लेफ्ट साइड, विच इज़ काइंड ऑफ baseless right now, because on the right side Lava Hound is connected, and it is game for Mohit. 3-0. Mohit is in the lead. Not great of a matchup. If Yasin had a Tesla, maybe he had something in his pocket, but not a great matchup at all. It's just another hard matchup for Team Pakistan in the third. So Mohit is right now 3-0 up. जो कि न्यू बंदे अभी आए हैं, वेलकम करते हैं स्ट्रीम में. एंड सर आप लोगों को जो है मैं बताता चलूँ कि अभी सिर्फ और सिर्फ पहला सेट जा रहा है, विच इज़ अ किंग ऑफ द हिल. एंड सो फार यहाँ पर पाकिस्तान 3-0 डाउन है एज़ यूजुअल इन द कोर्ट. एज़ यू कैन सी यहाँ पर मोहित वर्सेस फरकलीद का जो है मोटर वर्सेस मोटर मेरा मैचअप था, बट आई थिंक मोहित हैड अ लॉट ऑफ एडवांटेज एट हिज स्लीव्स. तो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है ऑफेंस एंड डिफेंस था मोहित के पास. वाइल विद द फरकलीद आई थिंक देयर वाज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट विथ ओनली हैविंग स्केली बैरल, एंड अगर वो मोटर भी करता तो आई डोंट थिंक सो ही वुड हैव
because of the deflections of the other decks. I think it's quite hard to take damage on the tower. Same case for Fussy versus Mohit. I don't think so it was that much of a winnable, but अगर Mega Knight का यही सही यूज़ किया जाता शायद winnable होता, but I'm not sure. Again Hawk First Fly and मोहित का यहाँ पर जो है मैच हमें देखने को मिला. यहाँ पर मोहित के पास लावा हाउंड था, but on the other hand Hawk First Fly जो है ड्रिल यूज़ कर रहे थे, but with cannon it's impossible to actually defend lava hounds and stuff like that. So let's see for the fourth match. Mohammad Star is up, and we will see if we can, capitalize in this situation and kind of come back right now. Okay, right now मोहित पे सस्पिशन यहाँ पर हुई है अगेंस्ट टीम पाकिस्तान, एंड मोहित को कहा जा रहा है कि ही इज़ नॉट ए capable player because he is playing quietly good जो है उसके अचीवमेंट्स के बस साइड, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज़ द केस. अगेन यहाँ पर मोटर का इस्तेमाल जो है हमें देखने को मिलेगा मोहित की तरफ से, but another simplified push is coming from toward the Mohammad Star's tower, and यहाँ पर हमें Mega Knight देखने को मिल रहा है. quite same deck as Fussy. Mega Knight यहाँ पर vulnerable है and might take some damage on the tower, which is absolutely good for Mohammad Star right here. What do you think, guys? Mohammad Star versus Mohit, Mega Knight versus मोटर, किसका मैच है ये, किसका मैचअप है? आप लोगों को क्या लगता है? टेल इन द कमेंट्स एंड आल्सो लाइक द स्ट्रीम टू यार, इट विल बी ग्रेट. हॉक राइडर को फ्लॉलेसली डिफेंड किया गया है, बारबेरल किया गया है अगेन, बट एक मैजिक आर्चर यहाँ पर हमें देखने को मिला है टू टेक अ लाइनअप हियर. वन लाइनअप ओनली ऑन द टावर, बट इट्स वर्थ इट. पाकिस्तान यहाँ पर 3-0 डाउन है, एंड मोहम्मद स्टार इज़ द लास्ट होप टू डू ए रिवर्स स्वीप राइट हियर, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स. सो फार मोहम्मद स्टार क्वाइटली जो है अच्छा एडवांटेज लेते हुए मेगा नाइट का एंड हिज मोहित के एलिक्सर नेगेटिव एलिक्सर का. तो मेगा नाइट रियली टुक अ ग्रेट हिट ऑन द लेफ्ट साइड. मोहित यहाँ पर स्प्लिटिंग की कोशिश करते हुए ऑन द राइट साइड यहाँ पर पुश किया गया है मोहित की तरफ से, ऑन द लेफ़्ट साइड में भी जो है यहाँ पर परस्यू किया जाएगा, बट यहाँ पर नहीं किया गया है मोहित की जानिब से, एंड मोहित इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल द सेंटरिंग राइट हियर. अगेन हॉक राइडर इज़ कमिंग ऑन मोहित इज़ वंडरफुल फॉर द हॉक राइडर टेक अ हिट विच इज़ ग्रेट राइट नाउ, विच इज़ ह्यूज फॉर टीम पाकिस्तान, एंड मोहम्मद स्टार इज़ डिफेंडिंग मोहित्स मोटर काउंटर्स विच इज़ ग्रेट. सेंटर पे यहाँ पर हमें मैजिक आर्चर मिला है, बट हमें यहाँ पर जो है फायरबॉल एक काइंड ऑफ एज अ काउंटर फॉर अ मैजिक आर्चर वी आर सीइंग राइट हियर. अगेन सेंट्रल मोटर यहाँ पर किया गया है मोहित की जानिब से, एंड ग्रेट टेस्ला बाय मोहम्मद स्टार. ग्रेट डिफेंस वी आर सीइंग राइट हियर फॉर मोहम्मद स्टार, capitalizing on the pressure, but that we're going to be seeing some hog rider behind the all of this, which is great for जो है यहाँ पर स्पेल क्या हमें देखने को मिलेगा, नहीं स्पेल हमें देखने को मिला है यहाँ पर, बट स्टिल Mohit is up some elixirs, which is great for Mohit, but Mohit doesn't decided to go for mortar or something like that. He's going in right now with the push right here, but will Mohit some take damage, but नहीं यहाँ पर damage ही नहीं लिया गया Mohit की जानिब से, which is great guys. यहाँ पर स्टार काफ़ी उम्दा तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हुए, एंड वी आर सीइंग सम क्लास गेम प्ले फ्रॉम स्टार एक्चुअली ऑफ मेगा नाइट, जो कि उसका मेन कार्ड भी है. अगेन फायरवॉल हमें देखने को मिला है, ई स्पिरिट जो है यहाँ पर हमें दूसरी साइड पे देखने को मिली है. बरसर्कर इज कनेक्टेड ऑन द टावर एंड स्टार हैज़ वन द मैच हियर गाइस. मोहित गॉट ओवरवेल्म्ड
by stars, Mega Knight and Hog Rider combination. But I think Mohit wasn't playing like before the matches. I think so. The suspicion may be right about Mohit. मोहित को यहाँ पर सस्पिशन के तौर पर देखा जा रहा है. Team Pakistan's manager has accused of him that maybe someone is using his account and playing on his account. But let's see what happens. मोहित को यहाँ पर डिफीट किया गया है स्टार की तरफ से and Star has played flawlessly the match, but he dropped it. To be honest, पिछले 3 मोहित के गेम प्लेस को देखकर ना और इस मैच को देखकर आई कैन confirm से कि someone was playing on his account. I can confirm, you know, मुझे confirm हो गया अभी कि भाई कोई खेल रहा है उसके अकाउंट पे, कोई खेल रहा था, but he dropped that match. I'm pretty sure. या बिकॉज जो है पहले 2 मैचेस हमें देखने को मिले हैं. या they had to pause this tournament, guys. They had to pause it. It's like ब्रो अगर ये चीटिंग पे एक्यूज होता है, आई थिंक सो चीटिंग पे एक्यूज होना चाहिए. बिकॉज इट्स वीव सीन यार, यही मोटर का गेम प्ले इसने फरकलीद के अगेंस्ट खेला एंड फरकलीद वाजंट इवन टचिंग. लाइक अगर चलो फरकलीद का मैचअप ही नहीं था, मैं आई कैन अंडरस्टैंड, चलो मैं मानता हूँ फरकलीद का मैचअप भी नहीं था इस सेंस में. बट द टाइप ऑफ ही प्लेड जो है यहाँ पर क्वाइट जो है डिस्टर्बिंग. बिकॉज एज यू कैन सी ही वाज गोइंग फॉर सेंट्रल जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला है. यहाँ पर फर्स्ट टाइम सेंट्रल मोटर हमें देखने को मिला है एंड एज यू कैन सी सेंट्रल मोटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं. डुअल लेन प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है. Even though not thinking before like playing, he was playing so decent and so cleanly, but in this match he was yaar, nah, if we should do Farkali and Yasin started trolling DK. Damn bro, ये इन लोग का बचकाना हरकतें शुरू हो गई है यार. Crazy. Should we see the Discord? हाँ सबर Discord देखते हैं ना. 1 मिनट. I think so. I was in the group maybe. ओके कहाँ पर ये लोग बातें कर रहे होंगे भी. रूल्स नहीं यहाँ पर, लीक शेड्यूल नहीं यहाँ पर, लाइव स्ट्रीम URLs, रूल्स एंड कास्टर्स इन्फो. आई डोंट थिंक सो. अबे ये बातें कहाँ पर जा रही है डिस्कॉर्ड पे यार. ये बातें कहाँ पर हो रही है, चैट कहाँ पर हो रहा है. यहाँ पर होना चाहिए वैसे चैट का ऑप्शन. नो ही वॉज ऑफ यार, उसका गेम प्ले ऑफ था क्योंकि ना वो सेंट्रल मोटर जा रहा था, ना वो दोनों साइड पे लाइक वो जो है दोनों साइड पे लाइक वो जा रहा था. इट्स आई डोंट थिंक सो इट वाज मोहित एट ऑल. ही ड्रॉप द मैच लाइक क्रेजी. ना मैन इस तरह थोड़ी करता है टू बी ऑनेस्ट.
अभी जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, बट लेट्स सी व्हाट हैपन्स. जब तक इस इन्वेस्टिगेशन को क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक जो है आई डोंट थिंक सो देयर विल बी लॉट ऑफ स्टफ अबाउट इट, सो वी विल वेट. बट द फनी थिंग इज कि यासीन एंड फरकडी शटिंग डाउन डीके. ब्रो, crazy. What just happened? I just joined. पहला सेट जा रहा है एंड देयर इज दिस मोहित गाय इन द opponent who was playing like should we kick him? या वही किक करेगा. खैर, देयर वॉज दिस मोहित गाय जो कि लगातार 3 मैचेस जीता है, ठीक है, एंड ही वॉज प्लेइंग सो परफेक्टली कि सस्पिशन हो रही थी. क्योंकि मोहित का अगर हम अकाउंट देखें, लेट्स सी मोहित्स अकाउंट, ही इज जस्ट अ एवरेज प्लेयर. यू कैन सी दैट, लाइक पता होना चाहिए ना. लेकिन अगर इतने बैचेस भी तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग मुझे बोलते हो नहीं ही वॉज प्लेइंग लाइक गुड या ही इज़ गुड, ही वॉज प्लेइंग टू डिसेंट फॉर अ टॉप 5 के. तो इस सस्पिशन को रेज किया है टीम पाकिस्तान के मैनेजर्स ने. एंड राइट नाउ जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है अबाउट द मोहित गाय, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. पहले 3 मैचेस इसने इतने परफेक्ट खेले, चौथा मैच इसने ड्रॉप किया. When the suspicion arised, यहाँ पर सस्पिशन के बारे में कहा गया, then we saw मोहित like playing like trash as. बहुत ट्रैश खेला उसने. लाइक मैच विनेबल था या नहीं था इसको छोड़ो, मैच विनेबल था या नहीं था उसको छोड़ो. लाइक ब्रो, मोटर की प्लेसमेंट्स देखो, लाइक यू लिटरली तुम जो है ब्रिज पे 10 एलिक्सर ज़ाया कर रहे हो एक मेगा नाइट को डिफेंड करने की. ब्रिज पे पोजीशनिंग छोड़ो. फनी यार, वी कैन सी दैट एक्चुअली इन द मैच. मैं जो है बता देता हूँ आप लोगों को, कोई बात नहीं. एज यू कैन सी अब तक जो है परफेक्ट जा रहा है, ठीक है. ही गोज़ फॉर मोटर एंड गोज़ फॉर लाइक स्टफ लाइक दैट. बट एज यू कैन सी एक चीज़ हमेशा याद रखना, no one in their right mind will ever defend the magic archer with this, even if he goes for a king tower activation. क्योंकि यही डेक फसी ने भी खेला है. तो मोहित शुड नो कि भाई मैं ये डेक, फसी ने ये डेक खेला, ये फसी का डेक है, ये मैच है, ये मैचअप है, ये मैचअप है, स्टफ लाइक दैट. बट लेट्स सी, यहाँ पर देख रहे हैं हम. अब देखो पूरे मैच में इससे सेंट्रल मोटर एक जगह पे भी नहीं किया, बट ही वाज लाइक इन द रीसेंट मैचअप्स ही वाज डूइंग सेंट्रल मोटर. एंड लुक एट हिज डिफेंडिंग, लाइक ही वाज डिफेंडिंग लाइक सम न्यूबी काइंड ऑफ स्टफ. सो विद दैट सस्पिशन आई थिंक सो टीम पाकिस्तान रेज्ड अ कंसर्न अबाउट हिम. लाइक इन दिस मैचअप जिस लेवल का मोहित खेल रहा था, यू एक्सपेक्ट हिम टू गो समथिंग लाइक डिफेंसिव टू डिफेंसिव, बट वो चीज़ हमें देखने को मिली ही नहीं. एंड ये नहीं कह सकते कि 100-0 मैचअप है. कहाँ से 100-0 मैचअप है? इट्स 50-50 बेंच की आंगे, इट्स 50-50. अगर लाइक मोहित पूरा डिफेंसिव लॉकडाउन हो जाता, ही वुड हैव शट डाउन मोहम्मद स्टार. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इस तरह का एक इंडियंस की तरफ से हमें जो है हमें देखने को मिली है. एक रेयोमिन नाम का बंदा, जिसका रेयोमिन नाम की आईडी है, उसके ऊपर कोई और बंदा खेल रहा था, राइट. Yes, of course, Basil. That's what I'm saying. It's not 100-0 at all, for fuck's sake. ये 100-0 है ही नहीं, winnable match है. And he played like he's a like third class player.
for fuck's sake, man. You've got a lot of stuff to actually defend the pushes, but nah, man. बट आई डोंट थिंक सो इस सस्पिशन के मुताबिक जो है डिस्क्वालिफिकेशन का जो है सीन होगा. मुझे नहीं लगता कि मोहित को डिस्क्वालीफाई करेंगे बिकॉज यू कांट एक्चुअली प्रूव इट थ्रू you can't actually prove it through just matchups. You have to look into the account and someone else logged in. तुम वो भी नहीं देख सकते तो जो है लॉजिकली तुम कैसे प्रूव करोगे कि कोई और बंदा अकाउंट पे खेल रहा है. यू कांट प्रूव इट. I'm pretty sure कि जो है कोई खेल रहा था कोई दूसरा बंदा बट कंप्ले भाई रीप्लेस को छोड़ो. मैं तुमको बताता हूँ सबर. अगर मैं मोहित वर्सेस फरकलीद का मैच देखो जिसमें मोहित सेम डेक यूज़ कर रहे हैं विथ मोटर राइट. तो एज यू कैन सी अब जो है यहाँ पर इसके डिफेंसिव मैकेनिज्म चेक करो एंड ऑफेंसिव मैकेनिज्म चेक करो राइट. ही इज़ डिफेंडिंग गुड. ही इज़ गोइंग एवरीथिंग इन द बैग नॉट डेस्परेट. जो है यहाँ पर हमें डिस्पेंसी देखने को मिल रही है. Trying to go pressuring the Farkarit on the both sides and stuff like that. We seen here जो है flawlessly defensive and offensive चीज़ें भी जारी है हमारे पास. जो है सेंट्रल यहाँ पर हमें मोटर भी देखने को मिल रहा है. एंड bro just look at this and he is going well and good. देखो वहाँ पर जो है स्केली बैरल in the back. It's like top class thing. When you go for skelly barrel, it's CRL thing. CRL में इस तरह बंदे बहुत करते हैं. Skelly barrel in the back and then going on the right side and left side और तब तक skelly barrel आगे तक आते तो वो जो है opponent kind of hypnotized kind of stuck. But at the same time you can see किस तरह rascal की distribution हो रही है. मोटर किया जा रहा है. मिड में डिफेंसिवली जो है यहाँ पर कैनन कार्ड हमें देखने को मिल रही है. बट इन द गेम प्ले अगेंस्ट स्टार नथिंग इज हियर. इन द गेम प्ले अगेंस्ट स्टार एज यू कैन सी नो डिफेंसिव मोटर. ठीक है सॉरी इट्स फसी वर्सेस मोहित. लेट्स सी या दैट्स द वन. अब यहाँ पर पहले तो ये मोड भी नहीं कर रहा था. ये मोड भी कर लिए. चलो ठीक है ऑलराइट ओके जस्ट सी गाइस. अच्छा पहला मिस्टेक यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है. ये गोस फॉर अ फकिंग मोटर इन 1x. नो वन इन द जिस तरह टॉप लेवल का ये खेल रहा था फॉर एग्जाम्पल एंड गोज फॉर द रास्कल्स टू. पहला सस्पिशन तो मेरा यहाँ पर बना दिल में. मैं कहा भाई ये तो हो ही नहीं सकता. हाउ कैन यू वेस्ट दीज मच एलेक्शन.
Again, you're playing against Motor, but he's playing desperate and stuff like that. No defensive motors, nothing, and he lost. And after we've arised this, भाई hypocrisy check करो, जब हमने इस situation को like जो है बताया, then उसके बाद यहाँ पर ओके BCL मार्टिनो को लगता है गलती से मैच दे दिया. स्केरी वो किधर रहते हो आप? पेशावर. आई एम पठान, पख्तून हूँ मैं. Somebody else joined the match. शुभम बाहर से आया. Wait, isn't he caster? Caster for someone else, maybe. There's no way in God's green earth. All right. Why they both are playing too seriously? Like they are not even your. What the fuck? Why are even they playing? Who is ABC Almighty? And they are playing seriously the duels also. I don't understand why he's playing duels with this guy. Are they trying to do something? What the fuck? What kind of stuff they are trying to do? इवन इन द आर्केन के चैट में भी लोग बोल रहे कि चीट कर रहे हैं लोग. Let me see what are they talking about actually. Okay. Why are they even playing that?
Hmm. Yeah. बट अकॉर्डिंग टू देम जो है मामला तो सॉल्व हो गया है, बट ये पता नहीं चल रहा कि मामला कैसे फॉल हुआ है. उन्होंने में देवर सेइंग गेट अ बेटर एनर्जी प्लेज मोटर ऑल द टाइम. ब्रो दे सेड कि इट वाज फेयर. बासिल भाई उन लोगों ने जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया है मोहित के लिए. दे सेड कि नथिंग वाज दैट ही प्लेज मोटर ऑल द टाइम, बट फॉर फक सेक वाज ही इवन प्लेइंग मोटर. अगर ऑल द टाइम खेल रहे हैं तो भाई ये क्या बात हुई कि वो खेल रहा है किस तरह था. सारे रोले में थे. देवर सेइंग कि गेट अ बेटर एनालिस्ट ही प्लेज मोटर ऑल द टाइम. जब एक्यूज़ हुआ तब मोटर वाला देखा उसका. खैर मैंने जीवनी बायस्ड है ही है. या आई थिंक सो द मैनेजमेंट वाज बायस्ड टुवर्ड्स हिम ड्यू बिकॉज द मैनेजमेंट इटसेल्फ इज इंडियंस. सो I don't know if that was a like biased opinion or not, and I don't want to. I think so, but the only thing I can say is that के management को bias नहीं रहना चाहिए about these situations. We can clearly see that the stuff happened. We saw that, but अब जो है यहाँ पर मोहम्मद स्टार को गुस्सा आ गया and he will I think so do something, you know. He will go for something. I think so. He will go berserk mode right here. Early यहाँ पर क्वीन हमने को देखने को मिल रही है, but will it be even that efficient because the queen is gonna die with the lightning and जो है यहाँ पर E giant आगे जाते हुए and जो है flaw so far. यार it's in the simple words it's Mohammad Star matchup, so you can't even argue. It's Mohammad Star's matchup, I'm pretty sure. All right, a nice. I really like what I saw here. A really nice, tornado on the side too, and 0 damage from the drill too. Clean defense by
Mohammad Star without any attacking troops and stuff like that. अगेन यहाँ पर डबल जाइंट हमें देखने को मिल रही है एंड डबल जाइंट इज अराइविंग ऑन द टावर एंड ग्लैड इज इन राइट नाउ इन द वेरी स्टूपिड पोजीशन. अगेन यहाँ पर जो है हमें कैनन देखने को मिली है बट सून शायद हमें यहाँ पर ड्रिल भी देखने को मिले. आई थिंक सो ड्रिल विल भी या ड्रिल भी हमें देखने को मिला है यहाँ पर. बट let's see what happens on this because so far Glad is taking control of the match by going on the right side. To Star did let him take a damage on the right side. Again यहाँ पर e-giant किया गया है पीछे से जो है गोल्ड नाइट किया जाएगा एंड मे बी एबिलिटी यहाँ पर हमें देखने को मिले. एबिलिटी देखने को मिल रही है यहाँ पर एंड यहाँ पर आई थिंक सो एक ड्रिल हमें देखने को नजर आएगा डिफेंसिव ड्रिल बट नहीं किया गया यहाँ पर. एंड अनदर लाइटनिंग बाय मोहम्मद स्टार विच इज ग्रेट. यहाँ पर सीन हमें स्टफ देखने को मिल रहा है एंड एबिलिटी अगेन बाय गोल्डन नाइट. यो गाइस गोल्डन नाइट इज ब्रोकन. आई डोंट नो व्हाई इतना छुपा हुआ है लाइक नोबडी इवन टॉक्स अबाउट गोल्डन नाइट. But I'm pretty much sure Golden Knight is just very good यार. Holy smokes. Again यहाँ पर naked हमें e-giant देखने को मिल रही है एंड हमें यहाँ पर एक lightning भी देखने को मिलेगी बेजानी मोहम्मद स्टार की तरफ से. एंड एक ड्रिल हमें यहाँ पर जो है डिफेंसिव नहीं बट यहाँ पर ऑफेंसिव ड्रिल यहाँ पर देखने को मिल रहा है बट बॉलर विल टेक केयर ऑफ इट आई थिंक सो. एंड took a lot of damage. Not a good damage but some damage at least. यहाँ पर हमें अगेन ड्रिल हमें देखने को मिल रही है बट मोहम्मद स्टार guys has won this match 2-3 Team Pakistan here. Really great. I think so the counter was spot on guys. I think the counter was spot on. Star is going all and out to win this set. We need to win this match today because अगर यहाँ पर हमें ये मैच हम जीते हैं तो हमारा सेमीफाइनल्स के लिए जाना एकदम गारंटीड हो जाएगा. We can advance to the semi-finals, but we need one set, 1 point or 2 points at least. At least 1 point or ज़्यादा 2 point if we get lucky today. Again coach यहाँ पर जो है मोहम्मद स्टार को गाइड करते हुए about the decks and really we've never saw him play e-giant that much but he played decent. Good stuff from Mohammad Star. I like it. Yo, these chests are so boring, yaar. I really like the Purana chest, you know. Star is gonna request soon. It's 1 minute tolerance time right here. But we're gonna see what happens. I used to play this giant deck that he's playing. I really used to play this when I was like new into this Clash Royale scene. And I did a 7.3k finish, which was a grand champion at that time. Golden days. But I'm playing this deck a lot recently. I don't have a Evo Magic Archer, the Hero Magic Archer. If I had, it would have been great. Alright, it's DK versus Mohammad Star. DK is like a machine gun, or maybe say grenade launcher, maybe missile launcher or something for the team.
And DK have a really good history throughout his Royal API. If we ever see him, I will show you his API after the match. I will show you if I remember or not. Okay, we're seeing some bridge spam kind of text from DK right here, and Mohammad Star is usual. I think so he's going with the E-Giant again, maybe. I'm not sure though. Interesting. Yeah, Mohammad Star have this matchup. I think so, yeah. Mohammad Star have this matchup. I'm pretty sure he's using E-Giant. That's the only deck I can think of right now. But what I think so this version includes the baby gag and stuff. We don't have a bowler, I'm sure. I think, yeah. Normally this kind of yeah, I think so he's using baby dragon, Mohammad Star. Yeah, he's using baby dragon, and the last card is of course E-Giant. Okay, not great. I think the ability really did bad for right here, but let's see how the Mohammad Star capitalize on this situation. Wait, on the other side the giant skeleton wasn't deflected at now, but let's see what happens. Mohammad Star playing decent right now. He's trying to goes for a E-Giant on the bridge, and soon Mohammad Star will go for Evo Cage right here. It's gonna take care of the Battle Ram, which is great. So far I think so in this matchup getting through the defense of DK will be tough, but with the great use of Golden Knight and Lightning will be really a key factor for Mohammad Star here. But getting through the DK's defense, it's hard. I know he doesn't have a central body, like he doesn't have a central troop like a building, but at the same time I must admit it's kind of hard to go through even in 3x. Yeah, it is hard. Great tornado we've seen from Star here. Again tornado will maybe जो है अबे ये connect हो जाएगा. Oh great. I mean I really thought that maybe the connection will be made right here, but the great use of a bar barrel to deflect the giant skeleton away. What do you think the last card for the DK is? I'm not sure. It shouldn't be arrows, but I think it's arrows. Maybe, yeah. Okay, Star is relying on the lightning damage. I think that's interesting. I think Star will be giving up the defensive lightnings and stuff. Go back position of this, but I think okay both side पे यहाँ पर एक push आ रहा है, but so far जो है मोहम्मद स्टार greatly defend करते हुए. That mother wage is kind of on my nerves too यार. अगर okay, nice, that's a really nice and decent यहाँ पर हमें E-Giant देखने को मिली है, but let's see if E-Giant will get some chip damage off of the tower. Okay, no, not damage at all. यहाँ पर हमें again ability देखने को मिली है यहाँ पर with tornado, which is a great thing, but Evo Ram यहाँ पर किया जाएगा DK की जानिब से, which will bring us certain problems. And Rice on the death side to wait, the last card was, and Star has won this match too. He has to play some good lightning, and he has won. As I said, he will go defensive, but he will be using lightning on the towers to get damage. That clutch with the Evo Ram was really important for Star.
because if the Evo Ram would have been connected, maybe the Lightning would have vouched for that. But Star really capitalized on the situation and taking the win from Pakistan. Maybe we see some reverse sweep from, and first ever quote win from Pakistan in this tournament. Maybe we're gonna see this. Maybe the day has come. Maybe. Great sense of defending, great sense of taking damage off of the Lightning and defending everything, like bridge spams on the both side. I think this was just too goated for Star. Now the Star, the score is 3-3, Basil. The score is 3-3. And it's gradually last versus last from both teams. So we might be seeing, okay, the last is Mourn, M-O-U-R-N. Nice name, I have to say. Where is Mourn? Maybe it's Mystic Light, maybe. No, that's Mourn. 2021 Sierra Badge and top 5 years been played, and recent top finish is top 8k. That's his recent finish. Okay. नेक्स्ट सेट जो है, अगर यहाँ पर ये सेट होगा, ये ख़त्म होगा, इसके बाद जो सेट होगा वो 3v3 होगा, जो 1 वर्सेस 1 होगा, मींस बेस्ट ऑफ 3. जिस बंदे से जिस टीम के 2 प्लेयर्स जीत गए वो सेट जीत जाएगा. एंड द मोड इज़ क्लासिक, नो लाइक जो है मेगा ड्राफ्ट एंड गे एस जो है मोड्स यहाँ पर नहीं है. सिंपल, इट्स क्लासिक 1v1s. We might be seeing some clutch from Mohammad Star here, guys. We might be seeing. एक और बात है यार, guys, if you don't mind, I will just, you know, मैं फ़ैन को ऑन कर लेता हूँ. Maybe थोड़ा बहुत शोर आए, but I really need to because यहाँ पर जो है गर्मी ज़्यादा हो रही है, मेरा मोबाइल हीट अप हो रहा है. आईफोन का तो आप लोगों को पता है. It's Mourn versus Mohammad Star. Okay, we saw some Tesla here. Maybe the same Mega Knight Hog Rider deck. Maybe the same matchup too. Yeah, I think so. It's like the same Mohit versus Mohammad Star. Yeah, it's same matchup. Alright guys, last time जो है मोहित को काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर मोहम्मद स्टार ने हैंडल किया था. But let's see if Mourn, if he can, you know, do something about the Mourn too. यहाँ पर मेगा नाइट की काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है. जो है काफ़ी हद तक मोटर यहाँ पर काइट हमें देखने को मिलेगा मोहम्मद स्टार की तरफ से. बट यहाँ पर अगेन हमें लेफ़्ट साइड पे शायद मोहम्मद स्टार को ये डैमेज लेना पड़े. एंड इट विल बी अ लॉट ऑफ डैमेज फॉर मोन राइट हियर गाइस. एंड मोन यहाँ पर सिचुएशन का एडवांटेज करते हुए एबिलिटी की है जो कि was not that great for Mohammad Star. Last 2 cards for Mohammad Star is Fireball and Magic Archer. So let's see what happens. Okay, it's not Magic Archer, it is Archer Queen. So it means that the lineup damage we can't be seeing that much. Great kind of intellect for not going the ability right here, because the queen would have gone away to the other side. क्या बना अभी जो है, अभी तक तीसरा सेट जा रहा है हमारा. एंड सॉरी पहला सेट जा रहा है, बट इट्स 3-3. उनके बंदे आउट हो गए हैं किंग ऑफ द हिल में, 3 हमारे साइड में आउट हो गए. सो इट्स लास्ट वर्सेस लास्ट. ग्रेट. यहाँ पर हमें वो जो है प्रेडिक्शंस हमें देखने को मिली है मोन की तरफ से. बट विल स्टार कैपिटलाइज ऑन दिस सिचुएशन. अगेन यहाँ पर जो है नाइसली यहाँ पर डिफेंसिव जो है जा रहे हैं मोन यहाँ पर. बट स्टार हैज़ टू डू समथिंग और मे बी ही विल गो फॉर एबिलिटी सूट. एबिलिटी यहाँ पर स्टार की जानिब से की गई है, बट यहाँ पर हमें डिफेंसिव मोटर हमें देखने को मिलेगा.
which will be a problem for Star right here to getting through the defense of. But somehow on the right side, Motor is connected, and the left side to Mohammad Star यहाँ पर both side यहाँ पर फंस चुके हैं. एंड लेट लॉक यहाँ पर मिस्टेक की गई है मोहम्मद स्टार की जानिब से, एंड स्टार हैज़ थ्रोन दिस मैच हार्ड. लास्ट पुश फ्रॉम मोहम्मद स्टार हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर. बट एक अच्छा यहाँ पर हमें जो है एज़ यूजुअल यहाँ पर जो है जो लाइक सबसे बेसिक डिफेंस होता है वो यहाँ पर किया गया है, विच मोहित failed to achieve. Star could have been carried us, but it's hard guys. यहाँ पर जो है again हमें मास्टर क्वीन देखने को मिली है, but let's see what happens if Star can take out some damage off of his tower. Again right side पर हमें Mega Knight देखने को मिला है, but the minions is DPSing the Mega Knight. और left side पे Magic आर्चर का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, एंड यहाँ पर मोटर किया जाएगा फ्रॉम जो है यहाँ पर. बट स्टिल इट्स हार्ड गाइस टू टेक अ डैमेज रियली. यहाँ पर जो है लेट यहाँ पर हमें लॉन्ग देखने को मिली है. राइट नाउ जो है अभी मोहम्मद स्टार इज़ वन अवे फ्रॉम द जो है वन फायरवॉल अवे फ्रॉम losing the match. but यहाँ पर जो है फर्क somehow clinging on to the match, but it doesn't matter right. फायरबॉल रेंज में यहाँ पर हमें मोहम्मद स्टार देखने को मिले हैं, बट इट्स हार्ड गाइस, यू कांट डू समथिंग अबाउट इट, नो नेवर. पहला सेट हम लोग टीम पाकिस्तान हारती है. मोहम्मद स्टार विथ ग्रेट रिवर्स स्वीप गोइंग ऑन, बट didn't favored at all, and we have lost the match here. I've got to say what do you think guys? क्या ये बंदा किस तरह खेल सकता था? बट आई डोंट थिंक सो. मोहम्मद स्टार could have won the match easily that much. I think so. I should.
We're going into the set 2, which is 1v1's best of 3. Pakistan team have a suspicion on the X-Men because he plays decent motor, so everyone is saying कि maybe यहाँ पर हमें X-Men हमें जो है देखने को मिल रहा है by playing the match. स्ट्रीमर और स्ट्रीमर कौन जीता? अभी तक मैच नहीं हुआ ब्रो. आई थिंक सो वो एंड पे होगा. It is sus yaar. The Mon is playing Star playing with his comfort deck, but Mon on the other hand is suspicious. We have a suspicion on him too because we think X-Men is playing from his account. Not sure about the situation, but I think so. Yeah, X-Men is playing from his account. X-Men plays a motor, and it's kind of similar gameplay too. And let's not forget, X-Men have top 43 GT finish with motor. I told them to let go all of the conspiracies and focus on winning the match. Will be much more important here, but Yasin is going with his comfort deck is really a nice option for to go for, because Yasin is playing on the top ladder for a really long time right now. So I think it's great. Again यहाँ पर दोनों साइड पे हमें pushes देखने को मिल रही है, but no, I don't think so, yaar. I don't think so. Mon is, yeah, I don't think so. Yeah, I'm pretty much sure Mon के account पे कोई खेल रहा है. Let me check his API real fast. I don't think so, yaar.
think maybe X-Mon is X-Men's account, maybe. I don't know. Okay. We don't even play Motor all the time. We played only 3 games with Motor. 3 battles. Only. In the competitive. Star is trying to play desperately on the tower, getting some damage off of it, but since the tower is in the spell range, I think so it will be much harder. But cycling to another Hog Rider is quite important for the Star right now. 2 fireballs away from it, but right now Star is trying to desperately go for the pushes and stuff like that. Again यहाँ पर जो है हमें एक डिफेंसिव मोटर हमें देखने को मिली है, but Moon has won the first match of the second stack. Interesting. Let me see his battles here. On his API, I'm not seeing any motor gameplay so far. I'm scrolling to his API. Even against Mohit, he didn't go for motor at all. He's playing random decks. Nah, man. No, I don't think so. Like I've seen a lot of matches right here, but like he played like 2 or 3 times overall. I think so. Today we're gonna get fucked by motor, because I think so DK is using motor.
first thing is when you play from or sharing your. Some decent damage on the tower on the right side for Khalid is trying to keep the magic archer alive too, but the wall breakers is going to connect on the tower, which is great from the Khalid side, and Khalid is trying to be aiming the DK right here. Let's see what happens. For Khalid is quite confident in the match right now. If he wins this match, it will be a lot much greater right now. Again with the minor we seeing with a quite great position, but DK predicting the position by himself right now. Let's see what happens. Again मैजिक आर्चर यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है. डिफेंसिव मोटर यहाँ पर किया गया है DK की जानिब से, बट DK आई थिंक सो बेटर. I really thought that maybe Fargate will be going for the ability. यहाँ पर जो है अगेन जो है डिफेंसिवली ज़्यादा जाते हुए DK ट्राइंग टू स्टैक कार्ड्स ऑन हिज ऑन. जो है यहाँ पर हमें प्रेडिक्शन देखने मिली थी फॉर मोटर, बट वी हैवंट सीन मोटर राइट हियर. लेट्स सी हाउ Fargate विल डील विद दिस सिचुएशन. अ लॉट ऑफ स्टफ ऑन द जो है बोर्ड राइट हियर, बट लेट्स सी अगेन यहाँ पर कनेक्शन हमें देखने को मिली एंड स्टार Fargate हैज फक्ड अप अगेन. सेट 2 यहाँ पर अगेन जो है जीता गया है फ्रॉम टीम कॉन्करर्स. नॉट ग्रेट एट ऑल. The reason why Fargate was actually BMing was Fargate might get disqualified for it. यार यासीन इंडियंस का पॉइंट क्यों आ रहा है मेंस गेम.
Nah, man, they are cheating. I'm pretty much sure at this point because इवन द अर्केन सीआर के जो चैट में अर्केन सीआर के स्ट्रीम में भी लोग कह रहे हैं कि भाई दे आर चीटिंग. आई डोंट नो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्लेइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर एक्चुअली चीटिंग. It's kind of,
डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में ये कहा जा रहा है कि दे विल see it after the tournament. When after this match happens, they will look into it. Alright, we are seeing some interesting matchup here, guys. Golem versus Mortar again. Alright. Again, यहाँ पर मोटर एक शॉट लेंगे टावर पे, विच इज़ ऑन द राइट साइड, एंड आई थिंक सो डजंट मैटर दो. अगेन यहाँ पर हमें जो है पुश दोनों साइड पे देखने को मिल रही है ग्लैड की तरफ से, एंड लेट्स सी इफ स्टार कैन कैपिटलाइज ऑन दिस सिचुएशन. यहाँ पर स्टॉप किया गया है विथ जो है, बट इट्स डजंट मैटर दो. अगेन यहाँ पर मोटर किया गया है ग्लैड की तरफ से, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, हाउ मेनी रिस्पॉन्सेस the star had, but because I think so it's kind of hard to do something about these kind of pushes with golem deck. But so far जो है स्टार यहाँ पर cling on होते हुए with this matchup, and on the left side on the left side there is a damage on the Summer Tower too. Update on scores guys, it's trash. पहला मैच हम लोग, पहला सेट हम लोग हारे, सेकंड सेट भी हम लोग हारे, थर्ड सेट में सीन ये बना, सेकंड सेट में ये सीन बना कि अगेन दे वर प्लेइंग सस. सस से मेरी मुराद ये है कि एक टॉप 8K का प्लेयर जो है इतना डिसेंटली खेल रहा था, तो फरकलीद हैड सस्पिशन अगेन ऑन देयर गेम प्ले. अगेन टीम पाकिस्तान रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट टू डू समथिंग अबाउट द मैचअप हियर, समथिंग अबाउट द प्लेयर हियर, एंड अगेन यहाँ पर जो है हमें जो है मैनेजमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, विच इज़ काइंड ऑफ बैड ऑन देयर टू बी ऑनेस्ट. अगर हम लोग एक इशू उठाते हैं तो जो है मैनेजमेंट को चाहिए कि उस इशू को हाईलाइट करे ज़रूर, बट द मैनेजमेंट सेड कि अब आफ्टर द मैच वी विल बी लुकिंग इनटू द सिचुएशन. इवन दो यार टू बी ऑनेस्ट मैंने API चेक की प्लेयर्स की, दे आर हार्डली प्लेइंग मोटर इन लाइक 3 or 4 days स्पैम टाइम. एंड द सेकंड बात ये कि उनकी जो चैट है, लाइक आर्केन CR का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी स्ट्रीमिंग हो रही है इस मैच की, उसके चैट में सारे इंडियंस जो है वहाँ पर प्लेयर्स दूसरी टीम्स के जो है क्वाइट अक्यूजिंग कॉन्करर्स ऑफ चीटिंग टू, बिकॉज दे हैव सॉर्ट ऑफ ड्रामाज इन एवरी मैचअप, in every match of this league, so they had their suspicion too on their end. तीसरे साइड यहाँ पर जा रहा है CRL का, एंड CRL फॉर्मेट, एंड मोहम्मद स्टार वर्सेस ग्लैड वाज द फर्स्ट मैचअप, एंड मोहम्मद स्टार हैज़ वन द मैचअप हियर, एंड मोहम्मद स्टार विल नाउ रिक्वेस्ट अगेन फॉर द सेकेंड मैच. अगर हम लोग ये सेट जीत भी जाते हैं तो मे बी देयर आर सम चांसेस के लीग जो है हम सर्वाइव कर पाए सेमीफाइनल्स तक.
अरे अरे भाई वो तो सब कुछ छोड़ो, जो अर्किन का मेन चैनल उस पर स्ट्रीमिंग हो रही है एंड उसमें भी जो है लोग जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं ऋतिक वगैरह एंड हेतिक हो गया, निजाल वगैरह, वो सारे कह रहे हैं कि भाई ये लोग चीटिंग कर रहे हैं. यार दे आर प्लेइंग सी स्टफ यार. Great. Right, it's Glad versus Mohammad Star in the second match here, guys, of the third set, which is a CRL format. तो इस तरह का स्टफ यहाँ पर जा रहा है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मोहम्मद स्टार की तरफ से ब्रिज स्पैम जो है हमें देखने को मिल रही है, बट ऑन द क्लैन साइड आई थिंक सो दे आर यूजिंग आरजी मे बी, या रॉयल जॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा फ्रॉम द क्लैन साइड. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मेरा चार्ज भी 22% है, विच इज़ काइंड ऑफ लो. अगेन यहाँ पर जो है हमें मंक देखने को मिल रहा है. ओके, इट्स यूजिंग मंक आरजी, क्वाइट डिसेंट मे बी. Alright, gone for again. Okay, this is quite a, I think so it's stars matchup. Maybe I'm overthinking things, but nice. Again nice जो है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है मदर विच की पोजीशन को फक करते हुए यहाँ पर ग्लैड अगेन यहाँ पर हमें जो है ये देखने को मिला. Mohammad Star is taking the damage right off of the right tower, which is kind of great right now. We say great gameplay by the Star so far in this tournament. He's carrying Team Pakistan on his own. यहाँ पर again जो है right side पे pressure बनाते हुए Mohammad Star trying to take damage as much as possible ताकि जो है full defensive mode में चला जाए. The piggy here taking damage off of the tower for Star, which is kind of good. But let's see what happens. RG जो है RG is kind of doing is his main card. Glad's main card so far यहाँ पर RG हमें देखने को नहीं मिली है. But I think this matchup is pretty much in Star's pocket. But जो है यहाँ पर हमें so far Mother Witch का भी सही यूज़ देखने को नहीं मिला है Star से. If he'd gone for like Mother Witch in the middle, it would have been great. Again यहाँ पर हमें एक better RAM देखने को मिली है, but Star is trying his best to take damage off of the tower, but Glad seems to be defending really well. But let's see what happens, guys. What do you think? Again यहाँ पर हमें RG देखने को मिल सकती है. Star can go for जो है ability यहाँ पर मोटर की हमने देखने को मिली है. This RG will take some damage off of the Star's tower. I think so. That's a really not a great point for Star right now. Again यहाँ पर जो है हमें जो है damage lead हमें देखने को मिल रही है from जो है Glad यहाँ पर, and Star trying to playing desperately, trying to take some damage off of the tower right here. But let's see what happens. एक RG अगर यहाँ पर जो है Glad की तरफ से होता है यहाँ पर, तो it will be bringing a lot of problems off across the board here. Again यहाँ पर जो है not a nice ability from Glad, जो कि
would have been a game changer, but I think so. Star is going for another push right here, and a great prediction of जो है a great prediction for the the other stuff, but again यहाँ पर lock किया जाएगा maybe, and then monk किया जाएगा, of course. Yeah, we're seeing something and go for ability. I think so forcing our ability is also great for Mohammad Star right here. प्रेशर यहाँ पर ब्रिज पे बना हुआ है ऑन द टावर, एंड अगेन यहाँ पर हमें पीकी यहाँ पर एक यहाँ पर जाते हुए देखने को मिली है. अगेन यहाँ पर एक पीकी जाएगी ऑन द टावर, एंड राइट नाउ स्टार इज़ काइंड ऑफ वल्नरेबल ऑन द हिज साइड टू. यहाँ पर जो है हमें आरजी देखने को मिल सकती है, एंड स्टार मे बी हैज़ लॉस्ट दिस मैच overall. Yeah, Star has lost this match. Not great. Even Star was playing good, to be honest, on his end, but at the same time he didn't have anything really good for the RG on his side, so that's, I think so, was a minus point for Star right here. Not a great luck though, but he was pressurizing good on the right side, trying to trying to shackle the Glad's defense and stuff like that, expecting to जो है mess up Glad, but not for today maybe. I will link against Anubhav in the streamers match, I think so. Yeah, it's 1-1 guys in the third set. We have to win this set, to be honest, to actually get a 1 point. We need that 1 point, to be honest. Then there's like 60% or 50% chance for us to actually qualify for the ongoing tournament. But if Star win this match, we can still qualify. Alright, I think match जाने. Moving on to the third match. Glad have 1 minute less. Maybe he's trying to bring up a counter or something like that. But let's see what happens.
What are you playing, guys? What is he playing? Mortar, okay. What do you think? Whose matchup is this? What do you think? I think bait can be really, match convenient in this matchup, but we've never seen Star play bait actually. Never in never life. So let's see what happens. Bad positioning of bait by the Star here, and Star have to defend right now. I don't know what's the last card for the Glad, because I think that the the arrows are out, because then the last match he used arrows in the deck, but it's pretty much bait's MU, I'm pretty sure. But we've never seen Star play bait. We never know. And another great from the Star is the delivery, because delivery is so low key underrated. I think so delivery deserve more fame than actual. एंड जो है यहाँ पर स्टार दोनों साइड पे काफ़ी अच्छा डिफेंड करते हुए, अगेन यहाँ पर दोनों साइड पे हमें पैरा जो है वो देखने को मिली, बट आई थिंक इट्स ओके ऑन द अदर हैंड, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफेंडिंग फ्रॉम द स्टार, बिकॉज and other important thing is that the Evo barrel will be a lot of great thing for Star actually in this matchup, because Evo the Glad didn't have any spells for Goblin barrel. I think that's a plus point for Star here. Star Glad don't have anything that much great for actually defending, but going with the Archer Queen in this deck with the bait deck, it's crazy, guys. Yeah, but on the right side, another drill is coming up right here. Star has to defend, and Star is going to play a little bit of skillish type of thing on the right side. But on the left side, the breakers are connected on the tower, and Star is going for bad positioning. अरे भाई स्टार बैरल तो ठीक कर ले तू ब्रो. यहाँ पर अगेन जो है हमें पुश देखने को मिल रहे हैं ऑन द लेफ्ट साइड, बट समहाउ डिफेंडिंग वेरी वेल. अगेन यहाँ पर बैरल किया गया, फाइनली सम ग्रेट बैरल टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल डजंट मैटर एट ऑल. स्प्लिट जो है यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रही है, रियली नाइस. हमें जो है डिफेंडिंग, आई मस्ट से great defense on the both side, and Star is actually back in the match on the driving seat right now, and on the right side it's going to be a lot of damage for the Star here, and Star somehow surviving in this match. Again right side left side को भी defend करना पड़ेगा, at the same time on the right side again एक barrel push हमें देखने को मिल रहा है. The back of Goblin will take the tower here, and Star has won the third set, so it means that guys we have still a chance to qualify for the semi-final. But that Archer Queen is funny though. That Archer Queen is damn funny. Star's obsession with the Archer Queen is different, to be honest. Today, man of the match is Star, because Star played really decent in throughout the match. Alright, I'm for the match. I think I will be playing some here. Maybe this is, I can play Golem too, but I don't think I'm up against this guy. Let's see what happens. I would have, liked to play RG today, but don't have any kind of deck right here for the RG. I can still play RG though. Let me set up RG maybe. Should I go for it or not? Let's see. If I can, do it or not.
Yeah, I will go for Cage here maybe and then go for Archie. What am I even doing, yaar? Bro, where are the even cards यार? Cards कहाँ पर है मेरे lols? Cards ही नहीं मिल रहे मुझे, अजीब. सबर यार शॉर्ट करता हूँ बाय राइट या इस तरह कुछ करते हैं. इसकी जगह क्या था यार? मुझसे अपने कार्ड्स ही भूल रहे हैं लोल्स. फायरबॉल. Don't have a fireball. Maybe I'm using somewhere else. Yeah, here मैं यूज़ करूँ. यहाँ पर मैं एरोस कर लेता हूँ शायद. Maybe. और वो इसकी जगह क्या था ये भी भूल गया मुझसे. जैपीस. Alright. I will go for RG in the first match. I don't care, bro. We don't care, bro. Again motor mains की यहाँ यार ये मोटर से ये लोग. Alright, don't worry, no worries I guess. At this point they are trolling. But let's go for fireball here. Some gangs. Nice I guess. Yeah, I'll go for defensive tombstone. Okay, Gigat. Okay, not great at all. Go for Zappies up front, yeah. I don't know. Because I don't have anything. Okay, I should have seen that to be honest, but I think it's okay. I'll not go for ability. I don't want to. Wasted a lot of elixir, but I think so. Okay, because I think maybe in the 2x maybe it's my matchup. That's why I'm playing little bit defensive right now, and also I don't want to take the damage of miner too. I don't want to just give him away some damages, Okay, he goes for defensive mortar. That's what I will do, to be honest. Alright, let's go for giant in the back. Goes for this. I don't know, man. Let's go for witch here. Yeah, that Archie is not going to take much damage, I'm pretty sure. So let's go for this and this, maybe this here. What's everything in the middle? I can go for this too, and go for this too. Let's go for ability right now, and on the left side, on the right side, I'm gonna go for this.
I know it's kind of stupid because he's going for motor anyways, but yo, that decent damage, I guess. Gonna go for ability again. Should I go? Yeah, I will go in, to be honest. I don't care to be, presuming on that, but he's dead. Yeah, I'm sure. He's trying to defend hard, but the Major Witch, I think so, is really great in this, Okay, right now we decide to go a little bit of passiveness. Great, I guess. Let's go for this here and maybe this here. Yo, just switch die, man. I have to take out Witch. I'm sorry, but I have to. Great. I've won, boys. I am up a match. Today I decided to go, Today I really decided to go comfort with myself, so that's why I'm going to be playing some graveyard too. I don't know if it's the Electro Wizard is a good choice or not. Back in the days, Electro Wizard was much more great, but I don't think it does work nowadays. Let's see what happens. Depends on the matchup too, right? Depends on the matchup too. So not quite sure about that, but I'm gonna go for Executioner in the back right here. Okay, we're seeing some recruits. Maybe, I'm not sure though. If it's recruits, it will. Nah, it's not recruits. Sea Giant. I really thought it's recruits though. Alright. Yeah, I'm gonna go for like bowler in the middle, maybe. Abey, go in the middle, yaar. Not great. Bhench ki aankh. It's okay, I guess. I'm playing like I really thought कि ये वो था maybe. I don't know what was this, but yeah, I think I'll take it. Bro, why this time though? I'm gonna go for bowler in the front. Just want to protect my wizard overall. Gonna go for ability. I think so it's my matchup if I play really good. He's gonna go for cage or something like that. Okay, we have this. I think it's okay. I'm not bad though. Let's go for naked graveyard. Yeah, I'm trying to pressure him overall. So that's why I'm going a little bit of stupid plays here, but I have freeze, right?
I will go for graveyard again, I think so, yeah. I really thought they didn't have lightning, that's why I played that way. Damn, I had matchup. I fucked up. I really thought he didn't have lightning. I thought he didn't have lightning. That's why I didn't go for stuff, you know. I think I'm back at playing drill again. Maybe he's playing too. This and this, okay. Hyper bait maybe. Not sure though. I think so it's maybe hyper bait. I'm not sure though, but let's see. Oh, maybe he's playing Mega Knight. Let's go for defensive drill. I don't have anything for it to be honest. That's why I'm going in the defensive drill anyways. Kind of a control matchup. It is a control matchup, I'm sure. I'm not sure I'm gonna be taking that much damage. Some trash push is coming up right now, I'm sure. I have to, yaar.
Trying to switch lanes, huh? Yeah, he's trying to switch lanes. Going for another ability, nice. Yo, I'm surviving this match so bad, yaar. On the right side, for fuck's sake. I had this matchup, yaar.